हेलो। કોઈને કંઈક જ સાંભળવાનું જો. આને બંધ કરી દે. આને બહાર લઈ જવો તો યુ ડોન્ટ નીડ હિમ. રાજુ લઈ લે. રાજુને બોલાય ને. રાજુ આ લઈ જાય ને બહાર.
Okay. Friends, uh, this is here Nitin Pathak. We are organizing the seminar. અવાજ આમાંથી ના આવવો જોઈએ, નહીં તો ખૂબ પેલું એ થાય છે, ઇકો થાય છે. Okay. This is C. Nitin Pathak, Ahmedabad. I can understand the emotional intelligence, which is very important one. I have my friend, Colonel Gautam. He has written a 2 books and he is in the uh, process of uh, uh, completing 2 more books: self-management, organization behavior, and 2 more. So he may be taking a sequel of these lectures. Okay. Sequel means continuing every Friday. And once his books are also very much profound. So his book launching, we will do it very shortly on portal, from where you can collect the book, from where you can take the book. So that would be Emotional Intelligence by Colonel Gautam. One more thing, today we have none other than the very much expert Anurag Mehta. I know him since very, very long, and uh, he has taken in number of lectures on emotional intelligence. Now he has linked emotional intelligence with Bhagwad Gita, which is a very unique concept. What Bhagwad Gita says, कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन. एक लाइन तो हमको सबको याद है. કોઈને ભગવદ ગીતા ખબર હશે કે નહીં ખબર હોય? કર્મ કરે જા અને ફળની ઈચ્છા ના રાખ. મને તો આ સેન્ટેન્સ ગમે જ નહીં. If I do something and if I don't expect the result, then what should I do? Why should I do? But what is the exact meaning of that? Is he will deliberate. But what I do in my life, first thing in the morning, I decide what I want the result. Number one. Number two, I have got yearly goal in my life. I have got monthly goal in my life. I have a goal of my office, each staff. I have a goal from my client. So, goal drives me. What Bhagavad Gita says, कर्मण्येवाधिकारेषु मा फलेषु कदाचन नहि सुप्तस्य सिंहस्य. क्या बोल શું કેવું છે अनुराग भाई? कर्मण्येवाधिकारेषु मा फलेषु कदाचन. बस इतना खत्म हो गया. अच्छा 2.47 કર્મ કરી જાઓ, ફળની ઈચ્છા મત રાખો. પણ હું એવું રિવર્સ કહું છું. આઈ સે કર્મ કરો, ફળની ઈચ્છા વગર કરો, કર્મ કરો જ નહીં. આઈ વિલ નેવર ડુ એનીથિંગ until I'm going to get result. हाँ. तो अब मेरा कंफ्यूजन दूर करने के लिए आई हैव कॉल्ड नन अदर देन एक्सपर्ट मिस्टर अनुराग. He is taking a lecture today. He has already taken a lecture at HDFC, and he is a corporate trainer basically. His corporate trainer is very much famous. I have attended 1 or 2. Okay. नहीं, ये तो पेन ड्राइव में नाखी दे ने, व्हाट्सएप में ले लो. એ પેન ડ્રાઈવ માં લઈને આમાં નાખી દે ને, 2 મિનિટનું કામ છે. Why you are become literate? Become illiterate. Okay. No, I'm just asking them. Okay. Now, I'm going to talk about like how I do my work. I have a yearly result. I have a process, input, process. Every work, there is a process, there is an input, and there is an output. Output is the result of process which you develop. I give you one example. One picture success जाता है, दूसरा picture success नहीं जाता है. क्यों? One is like person behind them does not give the energy to that work. एक पिक्चर में एक सॉन्ग होता है, उसको रिकॉर्ड करने के लिए 2 दिन लगता है. So many retakes in life. So many retakes. Okay. So that is what અહીંયા લગાડે આની અંદર છે. Everything you do, until you do properly, you are gone. So for that, I'm asking our speaker to take a call on that.
પેલું મારું એક પેજ છે આવશે, મારી પેલી સ્લાઇડ હતી એ મને લઈ આપણે જોડે. Take one more minute, then I'll give it. Okay. Uh, 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 so we have started exactly in time. Any question answered, we will unmute you and allow you to take a talk on that. Okay. This is a message from God by Pradeep Mukherjee. His book launching is already taken place, and his many presentation on YouTube will be available on my blog, cnitinapathak blogspot.com, and anything you want to hear about the messenger of God, you can search it. There are many presentations available. I know him since 1995. Messenger from God is around 100 pages book. They make you this book heal you. This book will make you very effective. Please go through this book, which is available on blog. You can purchase it. There are few first two chapters is available on blog, free. There is in my blog there are many presentation of ism available. So I request you once again, if you want to be free in your life, if you want to be a like a क्या बोलते हैं, surgeon's knife tool which can make your life very easy, is available in this book. I wish you go through the blog. There are some PPTs available and you can use it. This last thing which I'm talking about myself, my blog, and we are conducting the seminar every week, Friday. If you attend a seminar and you use it, I have done and attended n number of seminars in the years to come. And because of this today, where I am, and next time, even I am Mr. Colonel, who is right now here to attend the seminar. His two books, self-management, and one is organizational behavior. I will put it in my blog. I will put the other two going to come, self-management, and he will be available to you for next talk. I'll declare that also. And he is colonel retired, and he must how many what is your age, sir? He is 77, functioning like a lion. And at the age of 60, many people are saying that I'm tired. मुझे अब कुछ नहीं करना है. But if you see him, you'll be uh, you'll be really enjoying. With this emotional intelligence, I'm handing over the charge to Anurag. Anurag's PPT is here. This presentation would be also available on blog. And this is Anurag is a champion on the subject. If you want to learn and enjoy with him, thank you. Okay. Anurag is a regular faculty at CA, CMA, company secretary, and even many corporate like Cadila, HDFC, and many other places. Now he has established himself as people are very IQ oriented, but their EQ is very poor. But EQ कैसे बढ़ाना? And through Bhagwad Gita is going to be listened by none other than Anurag Mehta. With this, I am handing over the charge to him. At the end of the session, or in the meantime, if anybody wants to ask a question, you raise your hand, you will be unmuted. I am here to check it out. આપણે કોર્સ કોણ છે એમાંથી તને અનુરાગ આપણે છે ને તો આપણે અનમ્યુટ કરીશું અને એમને ક્વેશ્ચન પૂછવાની છૂટ આપીશું. You will be able to check it out. Okay. So those who are those who want a question in between, they would raise your hand and we would allow you to unmute themselves. This recording will be also available. This is also presented in YouTube as well as LinkedIn. With this, I hand over the mic to Anurag bhai. Thank you very much.
Thank you. Thank you, Nitin Bhai. Thank you so much for having me here. So Nitin Bhai and me, we always agree to disagree on 2.47 of Bhagavad Gita, Karma Neva Adhikaraste. He has a certain way of looking at things, and that's what I respect him for. My view is very different, and we'll be talking about us as we go ahead. So, emotional intelligence through Bhagavad Gita. Let us start. So, obviously, emotional intelligence, if you want to listen to it, you want to talk about whatever stress we're having right now. So, we're talking about stress at the workplace. Most of it is coming from there, and I will assume that most of us are belonging to some of the other kind of workplace. So, that's how we go about it. So, the first one, WHO says negativity at the mental and behavioral level leading to psychological problems is the largest and most common global occupation health issue. Second is work-life spillover, and that's again a problem. We all know work and personal life, work-life balance, a lot of things that go in that domain. The job stress is a huge emotional and financial cost to the employee and the organization. Needless to talk about this, urgent need for mature leadership skills. So we're talking about all of this, and we see that there is a lot of stress, there is a lot of uh, inner conflict, outer conflict, which is happening maybe with the colleagues, with the boss, with the subordinate at the workplace, maybe with the family member right here. So all of those things are there. And we see a lot of emotional outbursts, a lot of emotional expressions which were not really intended in the way we talked about something, we reacted in some way. So that kind of causes a concern about where we're going with this, how we deal with this. A lot of people have various ways of doing things, like somebody is going for music, somebody is going for some laughter, some program, somebody is going for meditation. So I'm a meditation coach and also doing my PhD on the topic impact of meditation on emotional intelligence. So that's again my core area. I'm an industrial psychologist also. So a lot of that will come in as we talk. And of course, I'm a spiritual seeker, and I give Bhagavad Gita lectures in a lot of corporates. And it's not the Sanskrit lectures, it's just the basic talk about Gita in terms of in the language in which we talk to our people around us, and of course in the language that is understood, in the jargons, in the language that it's understood by people. So that's what it is about. So we'll go ahead now. So a little bit about emotional intelligence first. So critical thinking, creative thinking, the left brain and the right brain, and the emotions reside in the right brain as we know them. All the beautiful things we do, as we see in the previous picture, somebody is on the right brain meditating, somebody is laying down, is all this is garden, and somebody is flying a kite, somebody is meditating, and we think we have a lot of fun there. Although on the left side, people are sitting in cubicles and working. And that's a critical thinking part, the left brain. But I think if you see, there are two bridges here. Somebody is walking from left to right, somebody is walking from right to left, because these all are complementary to each other. When we talk of emotional intelligence, while emotions reside in the right side of the brain, the left brain takes an important part in this whole equation, and hence the critical thinking part. A lot of times you don't think critically. For example, Monday blues. As a study in New York says, 90% of people have heart attacks on 9 a.m. On Monday mornings in New York. Or maximum heart attacks, let's say, happen at 9 a.m. on Mondays in New York. Now, that's very sad. And the reason that we see further is that they have to go to the workplace. And this is sad, right? A lot of people also missed out, a much bigger number missed out on having a heart attack, thankfully, but they are under stress. So this is sad. This whole thing is sad, and we want to talk about this. You don't want to be in a place where the workplace is hurting me, where I, on a Friday, for example, which is today, I'm excited about the next two chuttis, Saturday, Sunday, or the next maybe Sunday. I'm looking for a weekend since Thursday. Monday again, I'm having Monday blues.
that this critical thinking is very important as regards emotional intelligence. And I think something has to be done within me, first of all, and which Bhagavad Gita helps us do. So we have to change this thought process. We have to first think that if we have to earn money, we have to work. But that's not the way it is. It's just that what will you do if you had all the money in the world? You'll still work. Work gives meaning to human life. And therefore, work should not be a reason for any kind of stress. Whatever. I've been an employee, I'm a businessman now, I've worked for 23 years. I know both sides. So I know as an employee, and of course, I know as a person, as a business professional, I totally believe the kind of excitement that gives you a kick in the morning, something that you have to get up in the morning and like you already have a list ready of what you have to do instead of getting up and saying, "Arey yaar, aaj bhi office jana padega." And that's not what you want to be like. You don't want to go to the office because jana padega. That's a slave talking. You're not a slave. You have to understand you're not a slave. You're a human being. Freedom is my birthright. And this freedom is required. And what is that freedom? Not the freedom to not go to the office. It's like I work in the way I work and I love it. And I really love it. When maximum working hours are spent at work, they have to be good. We don't need anything else on emotional intelligence, honestly. When we understand that we don't want all this when we talk of work, right? So, so there's a stimulus like a boss talking about something, and there is a response to that, right? Within that stimulus and response is you. Within that stimulus and response. So there is a stimulus. Boss ने कुछ बोल दिया. There is a stimulus. Boss बोल रहा है आधा घंटा और रुक जाए यार, थोड़ा काम खत्म हो जाएगा. Just half an hour. And it's showing it's a toxic workplace. All this OTT language, I don't know what happens. What toxic, yaar? What is so toxic about it? But we talk all this all the time. I really don't like the word toxic. That there's nothing toxic about working a little extra. I know what is toxic. I know what are toxic bosses. But this is just because everybody is talking about it. I don't want it's a FOMO. I don't want to miss out saying something which is related to toxic. It looks very cool. It's not toxic. Life is not toxic. Relationships are not toxic. And let's see ourselves first. So I'm a guy like that only. I don't want to give you beautiful things and say, you are all right. That guy is wrong. That guy is wrong. I'm saying always, let's check ourselves first. That's how the things will be. That's how the solutions will come out. If you want solutions, if you're really listening to me for solutions, this is the way it is. First, let's do some introspection. Rather than sending these beautiful messages on WhatsApp, let's do some real introspection. Really. And that's how it all begins with you. So somebody said to you something, somebody's happened to you, somebody, maybe, for example, on 1st January, which is coming very soon, or already you've done it. We already have a list of next year, chuttiyan kitni hai. And then if there is a 26 January Sunday, you're like, oh my God, chutti gayi. I mean, really? That whole thing has to change. So there is a stimulus, Sunday ko 26 January hai. And there is a response in afterwards. And it's always in that space, as you see here, that space is you. That is where you are. And in that space, you have to do three things: awareness, alertness, and a lot of consciousness. We have to be conscious about our existence. We have to know what I'm doing. I have to be aware of the way I'm thinking. I have to be alert to the thoughts that come in my mind. And that's really important. Because as Gita is saying in 3.42, before the senses is the body. So there is a body. That's me, the body, and there are senses. Senses के बाद अर्जुन मन है, मन के बाद बुद्धि है, अहंकार है. Now ahankar, like, we think of ahankar in a different way. In those days when ahankar was used, it was just for me. Ahankar means me. How will you say me? You have to say me, right? When you talk about yourself, you say me. मुझे प्यास लगी है, मुझे यहाँ जाना है, मेरा ये है, मेरा वो. तो मैं जो है वो मैं है, उसमें कोई जजमेंट नहीं है, कोई नेगेटिव अहंकार सो कॉल्ड जजमेंट नहीं है. इट्स नॉट रूड, इट्स जस्ट मी, राइट? मेरी पहचान के लिए मैं ये शब्द यूज करता हूं मैं. वो अहंकार यूज किया जाता था पहले, वो बाद में आगे जाके होल थिंग चेंज्ड. सो सबसे पहले बॉडी है, बॉडी से बाद सेंसेस हैं, देन देयर इज दिस मन, मन के बाद बुद्धि है, एंड बुद्धि के परे अर्जुन तू है.
Why? Because you have to understand, all of these awareness, alertness, consciousness, please understand, I can watch my mind and the brain, as in the buddhi, the ahankar. I can watch it. I can watch my senses. I can watch my body. So I have to be before these things. I have to be before these things to be able to watch these, right? If some of this was before me, I wouldn't have watched it. For example, मेरा मन बहुत विचार आते हैं, पर मैं मन को देख पाता हूं ऐसा सोचते हुए, ऐसा कॉन्टेम्पलेट इंट्रोस्पेक्ट करते हुए। तो मतलब मैं कौन है? ये मैं जो अनुराग है उससे भी पहले एक वॉचर है, द सीसीटीवी एज आई कॉल इट। देर इज अ परमानेंट सीसीटीवी एंड सीसीटीवी डजंट जज यू। देर इज अ सीसीटीवी, इट डजंट जज यू. It shows exactly what it is looking at. There is no judgment. And that's what Gita is saying in 2.54 and onwards. Sthit pragya. What is sthit pragya? What is anasakt? A CCTV is not attached. Man is attached, maybe buddhi is attached, the ahankar part is attached. Because of some senses, you get some senses. Senses is what makes you feel the world. आपने कुछ देखा, आपको लगा हाँ दिस इज ब्यूटीफुल, आपको स्मेल है, आपको लगा वाह गुलाब जामुन, आपने कान से सुना कुछ फ्राई होता हुआ, like wow समोसे पकड़े. So you get attached to that thing. The senses are just neutral. They're giving you a message going inside your mind, which is creating some kind of an attachment, and then we go on. And you can see all of those things. So when this whole thing started, and 2.15, Bhagwan is saying that one who is unattached can see the light, if I can just paraphrase it. Unattached. तो भगवान ने शुरू किया कि अर्जुन तू कहाँ इन सब चक्कर में पड़ रहा है भाई? तू कहाँ पंडितों जैसी बात कर रहा है और ज्ञान जैसी बात कर रहा है, मूर्खों जैसी बात कर रहा है, ऑल ऑफ दोज थिंग्स. तो ये हुआ. उसके बाद भगवत गीता शुरू हुई एंड 18.72 में, जस्ट 6 श्लोक्स बिफोर गीता एंडेड, भगवान इज सेइंग, तो अर्जुन तेरा मोह खत्म हुआ कि नहीं हुआ? एंड 18.73 अर्जुन सेइंग हाँ जी हो गया. But a question that should come in a thinker's mind is that Ved Vyas is writing a book, or maybe Bhagavan Krishna is giving a lecture. He's trying to summarize now. चलो यार, let's summarize. हो गया बहुत, summarize तो करेंगे ना. Good author will always summarize. A good speaker will always summarize. See, summarizing, तेरा मोह खत्म हुआ कि नहीं हुआ? Pause. ध्यान योग, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, परम गति, विराट रूप, सत्य, ये अपने तीनों त्रिगुण है, प्रारब्ध कर्म, संचित कर्म, etc., etc. So much gyan was given. Boss, why are you just summarizing on moh? Because Bhagavan is saying this moh is the problem. The attachment is the problem. This attachment is the problem. Otherwise, there's no problem. Everything is fine. Everything is there. You need everything. In this world, when you're living, you need all the beautiful comforts. Nobody is telling you. Arjun wanted to go to the jungle. He said, मैं इनको कैसे मारूं? भगवान बोला भैया काम करो अपना. Leave all this. कहाँ तेरे दिमाग में पंडितों जैसी बातें आ रही? He didn't allow him to go to the jungle. So nobody is saying Bhagavad Gita is telling us to leave everything, anasakt, sthitpagya, samarpan. That doesn't mean you leave everything and go. You're not supposed to be the monk who sold his Ferrari. But that's a different story, by the way. Bhagavan is not saying that. Bhagavan is not saying wear saffron clothes and go somewhere. Not at all. He's saying live in this world and enjoy this world, but be unattached. Because there is where the concept of sthit pragya comes. The concept of sthit pragya or anasakt comes from there, where God is saying, just don't be attached. You live this life, relationships, money, job, work, whatever it is, you do everything, but be unattached. How to be unattached? Of course, we'll talk about it. We are here to get some solution. We're not here to give some pravachan. So first of all, before we go forward, please understand, Bhagwan Krishna is not Bhagwan in Gita. Otherwise, he is. You go to the temple, do all the things that do, Janmashtami, etc. In Gita, if you consider Bhagwan, Krishna as Bhagwan, what will happen? You'll not ask him something. Bhagwan ने बोला है, नास्तिक, आवाज मत करो, जो बोला है वही एग्जाम में लिख के आओगे. No, Arjun asked so many questions. And if I have to go in details, he was really rude. अरे भगवान दोनों चीज में से एक बोलो ना सीधे सीधे यार. It was almost like that. कर्म करूं कि ज्ञान में जाऊं? Just tell me one thing, yaar. Don't tell me so many things. What are you saying?
3-4 अध्याय निकल गए, आप एक क्लियर बात नहीं कर रहे हैं. Why are you doing this? Arjun could ask. Why can't I ask? Why can't I ask? I can also ask, na? But if I will consider Krishna as Bhagwan, then I'll not ask. भगवान बोल रहे हैं. And then I listen, कर्म कर फल की चिंता मत कर. हाँ भगवान, हाँ भगवान. बाहर निकल के, अरे बॉस चिंता कैसे नहीं करें, गोल्स होने चाहिए. Why this hypocrisy? I have to change this. So therefore, Krishna में, Gita में, Krishna somebody who knows more than you. Period. Full stop. Krishna is somebody who knows more than you, and you have all the right to ask questions. Don't give him any other sangya. No adjectives. No names. Don't give him anything. He is Krishna. You call him Keshav, you call him Madhav, you call him Chris, you call him anything. He's a guy who knows more than you, and that's it. And you have all the right to ask, नहीं यार ये समझ नहीं आ रहा भगवान, ये तो ठीक नहीं लग रहा, कर्म कैसे करो फल बिना इच्छा के, बिना गोल सेटिंग के लाइफ कैसे चलती है, ऐसे थोड़ी होता है. You ask ना. You ask the Pandit. Pandit to anyways is a person who would probably breed superstition. But I mean, you have to ask yourself. The answers are inside. But there has to be a question. This doesn't seem right. If it doesn't seem right, you have to ask questions. कर्म कर फल की चिंता मत कर. कैसे नहीं? So what Krishna is saying in this? Krishna is saying, बीज एक किसान ने, हमारे जैसे लोग हैं ना 40 पे रिटायर एक्सेट्रा, रिटायर होके चले गए, गाँव में कोई जमीन थी, बोले चलो अब खेती करेंगे. वेरी गुड, खेती करो. खेती कर रहे हैं तो बीज मंगा रहे हैं. बीज कहाँ से मंगा रहे हैं? हम तो अमेजोन से कम मंगाएंगे नहीं. हमने अमेजोन से बीज मंगा लिए, यहाँ वहाँ ऑनलाइन ट्रैक्टर ऑर्डर कर दिया, देखा क्या है क्या नहीं, पानी वानी हार्वेस्टिंग, व्हाट यू कॉल दैट, ड्रिप इरिगेशन वगैरह सब बढ़िया वाले सिस्टम लगा दिए. इनको तो आता ही नहीं, कुछ किसानों को मैं बताता हूँ कैसे होता है. वेरी गुड, आपने सब कर दिया, बीज भी बो दिया सब. नेक्स्ट डे, अरे ये तो निकले नहीं पौधा. तो गांव वाला बोला भैया रुको महाराज, 5-6 दिन लगेंगे. है ना, वी वांट इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन. शहर से आए हम लोग, क्विक क्विक करके. आई बिकम द प्रेसिडेंट इन अ कंपनी, 40 years of एज. ये लेट वाला काम नहीं होता है हमारा, वी डू इट क्विकली. ठीक है भैया, देख लो भैया, आप ज्यादा जानकार हो, बढ़िया. तो महाराज को क्या हुआ, बोला बीज उगे नहीं, उगे नहीं, पानी और डाल दिया, फर्टिलाइजर और डाल दिया, और सब कर दिया. वेरी गुड. नेक्स्ट डे आया, नेक्स्ट डे फिर वही, बीज तो उगा ही नहीं. मैंने अमेजोन को मेल डाल दी, यू सेंट मी फेक सीड्स और व्हाटएवर. थर्ड डे ही ओपनड, मिट्टी में से खोद खोद के देख रहा है, अरे निकला कि नहीं निकला, क्या है ये. तो उसमें जरा सा स्प्राउट हुआ है. अरे यार व्हाट इज दिस स्पीड, दे आर नॉट एफिशिएंट. He's telling the bees, you guys are not efficient. 10-12 बीज खोल के देख लिए, बोले सारे ऐसे हैं तो निकले ही है. फिर किसान बोला, अरे महाराज समय लगता है इसमें. अरे क्या समय लगता है, इतना स्लो है ये, ऐसे तो 1 साल लग जाएगा इसको. किसान बोला ओके बाबा तू देख ले भाई, शहर वाला जो भी. नाउ हु स्पॉइलिंग द होल केस? The guy who is done doing all this. The kisan, maybe unpad, knows that he has to wait. He's not attached. He knows the beej will sprout into a crop. Now, when I get attached to some kind of a result, I create negativity around it. When things don't happen my way. And please, things will not always happen according to you. Get even, get fair. Things will not happen as you thought it will. They will. It won't happen like that. It'll take time. Things take time. Right? You have to wait. So that attachment to the result doesn't make me wait, and then I spoil the whole thing. And of course, I get emotionally disturbed in a so-called toxic place. Come on. So just wait. Some things won't go your way. Maybe some seeds won't come out also. You have to understand this is the way life is. Things exactly the way you thought they will. Because I had attachment to the way I think. So being thoughtful about a way a thing has to be is okay, right? It's very human to think this is my plan and this is the way I intend to do certain things. But being attached causes the whole problem. All this emotional intelligence talk is about that. I should not be attached. Before we go into the Sthit Pragya concept from 2.54 onwards in the second chapter, and further on also many places, we need to understand. कर्म कर फल की चिंता मत कर.
एक्चुअली तो और आगे है, कर्म कर फल की इच्छा ही मत कर, पर रोज समझाना मुश्किल है लोगों को, इच्छा ही मत कर। ठीक है, आप चिंता तो मत, चिंता में तो आओ पहले, चिंता मत करो। इच्छा नहीं का ये है, इच्छा मत कर, मतलब यू लिव योर लाइफ द वे यूर लिविंग। तू काम कर, बस मजे कर, एक्सेलेंस के पीछे भागो, कामयाबी झक मार के पीछे आएगी। 21st century वर्जन ऑफ 2.47, फोकस ऑन एक्सेलेंस यार, कामयाबी तो झक मार के पीछे आएगी। एंड अगेन नो अटैचमेंट टू कामयाबी, कामयाबी आ जाएगी ठीक है, नहीं आएगी देखेंगे, विल वर्क ऑन इट, बट आई एम नॉट अटैच्ड। That's what emotional intelligence is all about. We'll go further now. So this is gestalt. Now, if you can see here, there is a face and there is a lady within the face. So what is this? Is a gestalt philosophy in psychology, which says that we humans have, there were dots in a round, not circle. The dots, that's it. A group of dots arranged in a circle. They are not a tendency to see a group of dots arranged in a circle. We say, okay, this is a circle. So we have this tendency to come out with a shape in a cloud. Oh, this looks like a dragon. This looks like a horse. But it doesn't, right? It is to create shapes or concepts, theories out of abstract things. And that is just a picture, right? But so that is just to be that concept. So we create a concept where we say this is the way things should be, to be this way, that way. And there is where you can't do anything about that. You have to work on the attachment. Making absolutely okay as a human being, we just need and surprise slash excitement. So these are the 6 basic limbic system. As we see here is amygdala. Amygdala is a place, an almond shape. So the whole spinal cord is also a part of that. Emotions, flight or fight response, feelings, we're not going to there. And I can just tell you, exercise your back emotions also reside in terms of what happened. What happened? He said, मेरे हैं, मेरे पितामह हैं, मेरे chapter ये तो दुर्योधन के बच्चे हैं, इन्होंने क्या बिगाड़ा है? That's why he said, why are you talking like a pandit? He was all giving ज्ञान, सब लोग मरते हैं, विधवा हो जाएंगी, अर्जुन sulking. And that's why people say गीता अपने को दूसरी सेकंड अध्याय से पढ़नी चाहिए. And that's why they miss out something. And therefore Gita. If I don't relate to the mind heart, which is cognitive dissonance, I will not be able to take a call. I'll not be able to go ahead. So cognitive dissonance में क्या होता है? माथे पे पसीना आता है. So neurosis में सॉरी क्या होता है? माथे पे पसीना आता है, बॉडी कांपती है, कम से माथे पे पसीना आ रहा है, बैठ गया. I have to find out where does it happen. Which is fearful. If this is something which is asking a lot from me, and I'm not able to, because Arjun knew there is one Bhisham Pitama which to him, and वो भाई साहब इच्छा मृत्यु लेके बैठे. Dronacharya is my guru. He knows my guys. I'll not be able to win. It was just a thought that came in his mind. In that the war, he knew everybody has to care of the team. He has to perform. Otherwise, they lose. If they lose now, Arjun questionable authority to take all kind of decisions. Already वो जिंदगी खराब कर चुका है. अब तो पता नहीं. That was something which came in his mind, and in that moment, he just got overwhelmed by these. In this particular thing. Otherwise, story behind it, Dhritarashtra ने एक दिन पहले क्या किया वगैरह, will not go, but which led to this particular movement. Smart guy is Dhritarashtra. He did something. We'll not go into detail. But arrogance, why he said बीच में लेके लड़ने आया? Who says that यार? War है. This is serious. This is arrogance. Arrogance. बोला ये तो बहुत बड़ी है. फिर नगाड़े बज रहे हैं, शंख बज रहे हैं, and all these stalwarts are standing. पीछे करण तो है ही. Got captured. So then भगवान का गीता का सब लेक्चर चला, and so there is where emotional intelligence comes. Remember, so this is one of my TEDx talk. Remember the reason for unhappiness. एक्सपेक्ट ही कैसे करते हैं कि दुख ना हो, मेरे हिसाब से चले सब, मैंने इतना प्लान किया, मैंने काम किया, मेरे में इतनी स्किल्स हैं, मैंने राइट. आई मीन यू हैव टू एक्सेप्ट इट. फिर आने नहीं होता तो है गलत. इज द डिजायर कि मेरे जीवन में दुख ना हो. दुख का कारण क्या है? एक इच्छा कि मेरे जीवन में दुख ना हो. About this, you have to really think. So emotional intelligence is all about these 5 parameters: as awareness, managing emotions, motive, response के बीच में आप हैं. There is where self-awareness is. Now let's go to Bhagwad. Bhagwad Gita is saying in 2.15 I said of life to achieve liberation. A free क्या है? मुक्त. Kind of desires, you are mukt. Moksha doesn't come after you die or something of that sort. No, it happens now. It happens right now. I am not attached to it and say, मैं किसी को नहीं जानता, मेरे को ना किसी से कुछ लेना है, ना दे जाना है. I'm totally alone. 15 seconds.
I have nothing to achieve. 2.62 and 63. What is that saying? When attachment is there, na, things not going on our way, and that when there is attachment, anger comes up, and after anger, and everything happens. All the kind of wrong things. 5, 4. So listen, second adhyay related to Arjun inside you. Second is an attachment. 2.55, 2.56. And all of this now till 2.72, where the second adhyay ends. Israk is that guy who in your own way, and you'll find it. The solution is there, 2.62, because when you are attached, there is anger. Not easy, not easy, because what Gita is then saying is, hey, I wanted you. All this nature, angry man, shant person, all of this is not your fault. You are created some gene, some conditioning, something coming from your parents. You are like that because, or maybe the way you lived in a particular place. And of course, that is a part of childhood conditioning. So all of that is you. It is not your fault to be in a particular way. You. That's how I wanted you to be. You are driven by Prakriti. By Prakriti, just give me a second, I'll give you the shlok number. They should always be there. Otherwise, we start believing isko kuch bhi bol raha hai. Second, I'll give you the shlok number. Almost everything is there. So, Prakriti 33, 3.35, and there are some of them. All this is coming from. Where is Prakriti coming from? It's decided by your Prakriti. You bear the fruits of your actions that you do as your swabhav. We need to understand, right? Gita is, ऐसी तो गीता नहीं आ गई. Why we have all the beautiful motivational section at Crossword or any other bookshop? Why is Bhagavad Gita? Because nobody understands Bhagavad Gita. People think is religious. And can we, with all my very much due respect for Sanskrit, can we keep Sanskrit out of Bhagavad Gita? Can we keep our Hindi, English, the typical one, Desi? Can we talk of Gita like that? So what is this Trigun? Satogun, Rajogun, Tamogun. भगवान इज सेइंग ये तीनों गुण जो है तुम्हारी प्रकृति का पार्ट है और मैंने इनको तुम्हें दिए हैं एज पर the balance has been created by me, but that you are more satoguni or maybe you are more tamoguni or rajoguni, they are given to me as part of your childhood conditioning and genetics. I have given that. How I have given that? What is my logic? It's not arbitrary. It's basically all the sanchit karma, which is पिछले जन्मों के बहुत सारे कर्म, which are good and bad. कर्मों का नाम सोचते हम सोचते हैं हमारे बुरे कर्म. अरे क्यों भाई? अच्छा भी तो हो रहा है तुम्हारे साथ. पूरा बॉडी ठीक है, वो अच्छा नहीं है क्या? वो भी तो कोई कर्म ही होगा. उनको बेचारों को पूछो जिनकी बॉडी में कहीं प्रॉब्लम होती है. फर्स्ट तो पहले तो उसी को कंसिडर करो. 2 आंखों से देख रहे हो, वही बड़ी बात है. गारंटी है क्या घर पहुंचे से पहले मेरी आंखें ठीक रहेंगी? कुछ भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है. राइट. सो एनीवेज, बट संचित कर्म इज अ मिक्स ऑफ प्लस एंड माइनस, विच प्रारब्ध कर्म, हम ऊपर से नीचे आते हैं तो भगवान एक प्रिंट आउट देता है, ले भैया तेरा प्रारब्ध है, इसको खत्म करके आ. और भी जन्म और भी कर्म क्रिएट करो, पॉजिटिव नेगेटिव, तो संचित वाले अकाउंट में जाएंगे. नेक्स्ट जन्म जन्म जन्म. तो वो जो संचित कर्म के हिसाब से आपके जो कर्म इकट्ठे हुए हैं, वो कर्मों में से कोई ना कोई कर्म को फैसिलिटेट करने के लिए दीज गुण, you are made like that so that you act in the way things have to be. You cannot be arbitrary. Boss, please. Hundreds of crores of human beings, they cannot be arbitrary. It is not possible. हर कोई अपने हिसाब से चल रहा है. हमें लगता है पर ऐसा नहीं होता है. इट कैन नॉट बी लाइक दैट. हर कोई अपने हिसाब से कैसे चलेगा? सब किसी के पास इतनी अथॉरिटी और वो कैसे आ जाएगा पावर ऑफ अटर्नी कि मैं ही कॉल ले रहा हूं अपने? इन द वर्ल्ड विच इज ऑल को रिलेटेड, एंड ऑफ द डे इट इज अ वेब ऑफ लाइफ. द होल वेब इज कनेक्टेड एट ऑल पॉइंट्स. हाउ कैन यू थिंक आई एम लिविंग अलोन एंड आई एम डूइंग थिंग्स? आई हैव डन दिस, आई हैव डन दैट. Can we come out of that I? Because that I is the attachment we're talking about. That I is the reason for emotional unintelligence. And what Gita Bhagavan is saying, what Krishna is saying in 9.22, the LIC punchline, Yoga Akshayam Vyaham Meham. What is that? He's saying, give me the power of attorney, boss. I mean, वो मेरे पास ही है वैसे भी, डिसीजन तो मेरे ही है, पर यू आर अननेसेसरी टेकिंग लोड. तेरे को गाड़ी चलानी आती नहीं पर ड्राइविंग सीट पे बैठा है. कैन यू सिट ऑन द लेफ्ट साइड? एनीवेज आई एम ड्राइविंग. लीव दिस मिथ्या. You live your life the way you want to live, you live, but accept the way things are. Right? He's saying, power of attorney, give it to me.
as in you surrender to me. Surrender, Samarpan is the central message of Bhagavad Gita. He's saying, surrender to me. Because when you surrender, you accept all the goods and bads. Because anyways, you're not accepting goods. Anyways, we are having a list of lot of bads happening in our life. And that is unintelligence, emotional. And there is where the problem is. You have to accept when you start counting the positives and you start being thankful, the gratitude workshops is happening everywhere today. Do that, attend that workshop. There's so many good things that are happening around you. Maybe somebody needs to make you realize that. Actually, you will only feel those gratitude workshop pointers. You will also do that, or nobody else will do that. But at least you should do that, right? And now I'll come to a very important message. 18.63 to 66. People say 18.66 पे गीता खत्म हो जानी चाहिए थी. In a way, अब आगे तो summary formality था. Understand what 18.63 is saying. भगवान इज सेइंग, चलो भैया एमबी की क्लास नहीं है, लड़ाई सामने खड़े हैं सब लोग, हो गया बहुत, 18 अध्याय, लेट्स फिनिश. 18.78 गीता एंडेड. 18.63 भगवान बोल रहे चलो भैया खत्म करते हैं अभी. तो तेरे को अभी तू डिसाइड कर. एज अ स्मार्ट गाय ही सेड, नाउ यू डिसाइड. आई एम आउट ऑफ इट. आई हैव गिवन यू ऑल द पॉसिबल ज्ञान. आई हैव शोन यू द विराट रूप ऑल्सो. एवरीथिंग इज डन फ्रॉम मी, राइट? नाउ यू डिसाइड what you have to do. लड़ना है लड़, नहीं लड़ना, योर कॉल. आई एम नॉट सेइंग माय कॉल, इट्स योर कॉल. अर्जुन खड़ा ही नहीं हुआ. ढीठ या जो भी बोले, खड़ा ही नहीं हुआ. ऐसे क्या होता है यार? इतना सारा ज्ञान भगवान के खुद के मुंह से तुमको मिल गया, एंड यू नॉट इवन स्टैंडिंग, इज नॉट इवन रिएक्टिंग एट ऑल. भगवान बोल रहे हैं भैया आप देख ले, तेरे को समझ में आ गया, अब तू डिसाइड कर क्या करना है. 18.63 इज नॉट स्टैंडिंग. 6465 भगवान इज स्टिल सेइंग. वो तो एम्बैरेसमेंट, अपने ऐसे को ले तो एम्बैरेसमेंट हो जाए. नहीं यार, तो खड़ा नहीं हो रहा है, के साथ में है यार, अपने तो उठ के चले जाए वहां से. But he being Krishna, he stood there, he said couple of more things to convince him. 18.66, Bhagavan says, I give you my personal confirmation that no path will be accumulated to you. You just go and fight, please. यार ऐसा आरबीआई का बॉन्ड तो हमें कोई नहीं देता, सेफ्टी वाला है. भगवान को तो, अर्जुन ने तो भगवान के मुंह से सुन लिया, मैं तेरे को गारंटी देता हूं तेरे को कुछ नहीं होगा. ऐसा गारंटी तो हमें नहीं मिलता. पर ये सब छोड़ के हम ये देखें, वेद व्यास, द रिस्पेक्ट आई हैव फॉर दैट ऋषि मुनि, दैट whoever we say, is that he was so honest in this whole thing that he said this, that देखो भैया ये सब ज्ञान व्यान सब ठीक है, अल्टीमेटली जब तक मेंटली एंड फिजिकली अप्लाई नहीं करोगे. तो अर्जुन जैसा आदमी भी खड़ा नहीं हुआ है भगवान के मुंह से सुन के, और भगवान को गारंटी देनी पड़ी कि चल भैया उठ, चल लेट्स जस्ट स्टैंड अप एंड सेट जस्ट फाइट. एंड उसके 6 श्लोक के बाद भगवान ने बोला तेरा मोह खत्म हुआ कि नहीं, देन वी टॉक्ड अबाउट एटसेट्रा एटसेट्रा. सो भगवान के बोलने के बाद भी खड़ा नहीं हुआ. तो भगवान इज सेइंग, कृष्ण इज सेइंग, वेद व्यास जी इज सेइंग दैट बॉस, डोंट एक्सपेक्ट कि एक गीता का लेक्चर सुनने के बाद तुम ठीक हो जाओगे, एकदम जिंदगी चेंज हो जाएगी, ट्यूबलाइट्स ऑन हो जाएंगी. ऐसा नहीं होगा. You'll have to work on certain things. You'll have to work in certain ways. You have to work on it. And that's why I'm saying, चेंज तो मुझे मेरे में ही लाना पड़ेगा. दूसरों को चेंज वैसे भी नहीं कर सकते, करना भी नहीं है, मुझे को चेंज करना है. तो फर्स्ट थिंग दैट गीता इज सेइंग, गीता जो समरी है वो है मोह, अटैचमेंट. लेट्स रिमूव दैट अटैचमेंट फ्रॉम एवरीथिंग. while we love everything, I want to have all the money in the world, I want to have the best of relationships, everything. Can I be unattached to whatever I have? Can I accept the moment right now, power of now? Carpe diem के लोग टैटू बना के रखते हैं, अरे क्या मतलब है उसका? है, what is the point? Power of now, बड़ी Eckhart Tolle, wonderful author, wonderful author. Please read Power of Now. But the point is, that is also what he's saying, surrender. I have a book which is called Life is a Fully Paid Holiday. Life is a Fully Paid Holiday, which is a modern version of Bhagwad Gita. It's an e-book. In the same way I've been talking, it's in the same way the book is written, same Indian Desi English. It's saying life is a fully paid holiday. You've come here on a holiday which is fully paid. Anyways, you didn't bring your own currency na with you. Free है सब कुछ. You live your life. You just live your life. लेकिन हॉलीडे का डेफिनेशन हमको लगता है सुंदर. कहाँ सुंदर? घर में तो भी माँ मियाँ बीवी के झगड़े हो जाते हैं हॉलीडे पे. क्या मतलब है?
कौन सा कोई बहुत अच्छा लगता है? हॉलीडे से आके उल्टे स्ट्रेस ज्यादा होते हैं. So we're not going into that holiday. I'm saying it is a fully paid holiday where the air was given to you in free, where the water is given to you in free, where the body is given to you, the eyes and all the senses are working fine. They are given to you in free. The people you meet, the good ones particularly, are given to you for free. The so-called bad ones are giving a lot of depth to your soul. Osho is saying happiness is shallow. Depth comes from गहराई. गहराई में जब हम डूबने लगते हैं ना, तब पूछते हैं भगवान ये क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, भगवान तू कहाँ है, ये क्या है, जीवन के तरीके क्या है, एटसेट्रा एटसेट्रा, ऑल द थिंग्स आर देयर. राइट? अदरवाइज हम नहीं पूछते. अच्छे में कौन पूछता है? अच्छे में तो मजा आ रहा है बस. प्रॉब्लम आती है व्हेन आई एम सैड, व्हेन आई एम अनहैप्पी, देन आई आस्क क्वेश्चन, भगवान मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? हाँ, तुम ऊपर से आया अलग से, तुम्हारे साथ ही क्यों हो रहा है? सबके साथ हो रहा है. लुक एट अदर पीपल एंड यू आर स्टिल सो बेटर, स्टिल सो फाइन. राइट? सो couple of things I guess has been done. So what Isha Upanishad and other Upanishads also, Mandukya, etc., all of them are saying, Bhagavad Gita is also saying, Shastras are saying, पानी की बूंद, पानी की बूंद ली और समंदर में डाल दी. पानी की बूंद ली और समंदर में डाल दी, तो वो पानी की बूंद क्या हो गई? समंदर हो गई. वो पानी की बूंद समंदर हो गई ना. पानी की बूंद इन वाटर थोड़ी रही वो, अब वो समंदर हो गई. मन क्या बोलता है? वाह, उसके पास पावर आ गया. अरे पावर का क्वेश्चन ही नहीं है. पावर इज रिलेटिव. एक ही समंदर है, उसको किससे compete करना है जो है, पावर है नहीं है, वट एवर इट इज, अपनी लिमिट तो वो भी क्रॉस नहीं कर सकता. वो स्ट्रेस नहीं लेता उसका. तेल की एक बूंद डालोगे तो वो डूब नहीं पाएगी इतने अथाह समंदर में. एक तेल की छोटी सी बूंद को समंदर डुबो नहीं सकता. लेट्स नॉट गो इनटू द पावर पार्ट. लेट्स अंडरस्टैंड. अब ये पानी की बूंद अंदर गई और ये सोच रही है, ओ माय गॉड, इतना बड़ा समंदर, मेरा क्या होगा, मैं डूब जाऊंगी. इतनी सारी बूंदे हैं, मेरा क्या होगा? That is the whole problem. No attachment, the wrong identity. Thinking I am the boond. I should think I am the samandar. There's nothing to do and nothing to fear about other boons. इनसे compete करना है, ज्यादा पैसा कमाना है, ज्यादा अच्छा लगना है. Why do you want to compete here? There's no competition. There is no competition. Competition का जगह ही नहीं है. Why are you getting into all that? Right? So that now how do we get rid of attachment? So as I said, my PhD is going on the topic impact of meditation on emotional intelligence. So this is meditation, right? Meditation, mindfulness, consciousness, awareness. We talked about this. The stimulus between the space between a stimulus and a response. They will always be stimuluses around me. Can I call this guy? Battery. Oh, battery जा रही है. If you can put the charger. So while I hope the battery thing is okay. So meditation is something which helps you to get out of negativity. Meditation helps you that space, no, that space between the stimulus and response. As long as I have senses, I will have stimuli around me. As long as I'm living in this world, I will have people around me who will instigate me into things that I don't want to be like. I'll always be like that. There'll always be people around me who'll be just telling me, ऐसा कर, वैसा कर, ये ठीक नहीं है. I'll be having complaints with people. All the negativity will be there. So that space where I become a CCTV. I do watch CCTV meditation on Anurag Mehta on YouTube, right? CCTV meditation on Anurag Mehta on YouTube, right? That is one place where I have a CCTV meditation video. Just have a look. Maybe anuragmehta.com. There are some some blogs if you love to read. A lot of blogs on this particular and such organizational behavior topics. A lot of stuff is there, right? So, anyways, so that is one. So, how do you remain in that space? Meditation helps. As my research is going, I did a research with 500 people and we did meditation for 20 minutes for 7 days in corporates, only the working professionals, employees, particularly 500 employees of various corporates, mostly in Ahmedabad.
what we found, 7 days of meditation. There was a pre-meditation test and a pre-emotional test and a post-emotional intelligence test. And we compared the scores. The same test, pre and post. And what we found after 7 days of meditation, पहले एक फॉर्म भरा, उसके अंदर कुछ रिजल्ट आया, मार्क्स आए, बाद में भरा एक मार्क्स आए. What we found was there was a 7.54% increase in emotional intelligence in only 1 week of meditation. I did it for 1 day also. I've got research papers on the internet on that. What they are saying, 1 day meditation that brought up 5.11% increase in emotional intelligence. 1 day as in 20 minutes, one session of meditation, 20 minutes, and brought up emotional intelligence by 5.11%. One session only. 7 days of session, of course, the economies of scale, therefore the results won't be that high, but 7.54%, 7.5% increase in emotional intelligence. And that's the power of meditation. And we'll talk about meditation a little bit. Gita 6 chapters all about Dhyan Yoga. We'll talk about that. What happened? Give me a second. Just give me a second. I guess something moved. Cursor is not working. The cursor is not moving. Give me a second again. Where is the point? Here it is. Where? Oh, it is? But it should move here, right? It's not moving here. No, it is the one on which Zoom is connected. So I don't know. Anyways, would have wanted to show, but that's okay. But both keyboards I'm using. It is not working, Shivam. So nothing working out. Anyways, so what I was trying to say was there was a research thing, a thing that I've made. I wanted to show that, but that's okay. That's not very important. The thing is, what Bhagavad Gita is saying. Bhagavad Gita is saying Samarpan. Bhagavad Gita is saying Samarpan, how? Through full detachment. Detachment to you. So Bhagavan is saying in the beginning, तू पंडितों जैसी बात कर रहा है, etc. He's saying you're thinking from a wrong vantage point, Arjun. You are not Arjun. Nanan Chintante Shastrani 2.23. What does that mean? ये आत्मा को अग्नि नहीं जला सकती, जल नहीं भिगो सकता, all that हवा नहीं उड़ा सकती, etc. etc. शस्त्र नहीं काट सकते, right? All of that. So 2.23, 2.24, etc. What Bhagavan is saying, बॉस ये आत्मा अभी मेरे को प्रॉब्लम हो रही है यार, मेरा ईएमआई क्लियर नहीं हो रहा, मेरी हेल्थ का इशू हो गया है, तुम कहाँ है आत्मा? अंडरस्टैंड द पॉइंट हियर, अंडरस्टैंड द रेलेवेंस हियर. What Bhagavan is saying, the wrong identity, therefore attachment to the wrong place in the wrong way. What Bhagavan is saying is that you are not this body. Because this body can change, ना. आज मेरा हाथ पैर कट जाएगा तो मैं ही रहूंगा, लेकिन है ना, आज मुझे कुछ हो गया तो तो भी मैं ही रहूंगा. मुझे प्यास लगेगी, मुझे खाना खाना है, मुझे यहाँ जाना है, मेरे विचार तो वैसे ही रहेंगे ना. मैं तो रहूंगा इन स्पाइट ऑफ माई बॉडी बीइंग हार्व्ड ऑल्सो. जब तक मैं जिंदा हूं मैं ही हूं ना, अनुराग. इफ आई लूज माई मेमोरी, फॉर एग्जाम्पल, आई लूज मी, अनुराग, साइकोलॉजिस्ट, दिस दैट एक्सेट्रा एक्सेट्रा. बट एक एक सिस्टम तो ऑन रहेगा ना, उसका नाम कुछ और हो जाएगा. मे बी मैं कौन हूँ, कहाँ हूँ, यू फॉरगॉट एवरीथिंग, बट मैं तो रहूंगा. देयर विल बी समथिंग इनसाइड मी which will remain. So that me, body, senses, मन, बुद्धि, वो मैं जो है, in spite of all of that goes inside me, मैं तो रहूंगा ना. उस मैं को कुछ नहीं कर सकते. अभी मैं अर्थक्वेक में कहीं नीचे दब गया, 7 दिन के बाद निकला, वो मेमोरी है, पर मैं तो हूं ना. मैं शरीर, चलो शरीर आधा कट गया मेरा, पर मैं तो रहा ना. तो मुझे कुछ नहीं हो सकता. व्हाट भगवान इज सेइंग, बॉस बिकम फियरलेस. स्वामी विवेकानंद सेज जीवन में अगर पाप है तो एक ही पाप है, वो है डर, भय, फियर. भय क्यों है? बिकॉज मैं अपने आप को अटैच कर रहा हूं बॉडी से. मैं अपने आप को समझ रहा हूं अनुराग. अनुराग तो नश्वर है, अनुराग को तो कुछ भी हो सकता है, इसलिए डर है. मैंने अनुराग रियलाइज इज अनुराग और नो अनुराग, देयर इज समथिंग विच इज अ वॉचर, देयर इज समथिंग विच इज अ कॉन्शियसनेस, mindfulness, awareness, alertness, something which is beyond all of this. Then, yeah, right. फिर मुझे तो कुछ हो ही नहीं सकता.
आई कैन चैलेंज एंड टेल एनीबडी, मारना है मारो, जो करना है करो, तुम मुझे नहीं, मुझे कुछ नहीं कर सकते। लोगों को समझ नहीं आएगा तुझे, अच्छा मैं बताता हूँ, नो यू डोंट अंडरस्टैंड, ये शरीर वेरी जो करना है करो बॉस, जब तक मैं जिंदा हूं मैं तो हूं, उसको कोई नहीं मार सकता। दैट इज व्हाट कृष्ण इज सेइंग। बस यू आर ऑपरेटिंग फ्रॉम अ रॉन्ग vantage point, you are operating from a wrong place, you are not that which you think you are. So that is what is emotional intelligence. When you come out of the real, the wrong identity and enter the real, become the ocean instead of the drop, the tiny drop, you're emotionally free. You're free. That's moksha. That's moksha. So for the time we have, I think we'll try to end this now and we'll wait for question answers. And also the fact कि अंतिम भाई ये नहीं चल रहा है, दोनों चीज नहीं चल रही है, हाँ ये चल रहा है, चलो एटलीस्ट माउस तो चल रहा है, but I can't go to the next slide, or maybe somebody else will have to see. I can see some chats are there. So some questions, if there are some questions. So should we, I don't know, if you can just put up your hand, so we'll ask questions. We'll, हाँ एक मिनट लो, You want to ask a question? how nice of you. Anyone wants to ask a question? I'm Anyone. allowing everyone to unmute themselves. Okay, you can unmute themselves and ask a question. Anyone can raise a question रुको, and let me see कौन है. Hemang, Arpit. I can hear a Sir, voice. can you hear me, Anurag sir? Yes, yes, I can hear you, ma'am. Sir, मेरे को एक क्वेश्चन जानना था. हाँ जी. If we can describe about life, what is life as per you? Life. Yes. Beautiful. So, life of Anurag Mehta, for example, is just a bunch of memories that he has till now, and whatever will happen as we go ahead. When you get attached to that life, is what all that I'm talking about. When you get attached to that life, there's a problem. जिंदगी क्या है? एक जस्ट एक एक्सपीरियंसेस का बंच है जो मेरे को मेमोरी में याद है, कुछ चीजें नहीं याद हैं, कुछ सबकॉन्शियस में जाके मेरे बिहेवियर को डोमिनेट करके इन्फ्लुएंस कर रही हैं, कुछ कॉन्शियस लेवल पे मैं ऑपरेट कर रहा हूँ, मुझे मेरी गुण जो है वो गुण ऑपरेट कर रहे हैं. सतोगुण की हमने बात करी, रजोगुण की बात करी, एंड तमोगुण की बात करी. सो ऑल ऑफ दिस, as I said, are dominated by the sanchit karma that I have, and maybe the prarabdha karma also. So basically God is driving the car. वो छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको लगता है मैं कार चला रहा हूँ, क्योंकि वो रिमोट में कोई और आदमी लेके पीछे कार चला रहा होता है. इट्स जस्ट दैट विद अस. और मुझे लगता है मैं एक्सीडेंट ना कर दूं, मुझे लगता है मैं धीरे चलाऊं, मुझे लगता है मैं तेज चलाऊं, अरे बहुत ट्रैफिक है यार क्या. आई जस्ट नीड टू कम आउट ऑफ ऑल दैट. आई जस्ट नीड टू बिलीव आई एम नॉट ड्राइविंग. क्यों बर्डन लेना है यार, चिल मारो ना लाइफ में. So that is what life is. Life is nothing. Life is nothing. And I'll tell you, Pradeep Mukherjee is my guru actually. And I've been knowing him as long as Nitin Bhai also. So when you read Pradeep Mukherjee, you'll be, he gave me those freedom concepts. अरे जिंदगी कुछ नहीं यार, तुम जिंदगी का मतलब बनाने जाओगे तो प्रॉब्लम है ना. मतलब क्यों बना रहे हो जिंदगी का, जिंदगी कुछ है ही नहीं. So I'm sorry I could not see your name, ma'am, but I hope somehow I've given some answer in the little time that I have. Sir, Hemlata Devnani, you know me personally हाँ जी, also. हाँ जी, हेमलता मैम. सॉरी, मेरे को यहाँ नाम नहीं दिखा था. मैं कैसे हो मैम, बताइए. बिल्कुल ठीक sir. Thank you so much. माय प्लेजर मैम. एनीवन एल्स विद सम क्वेश्चन? बोलो. Sir, good evening. Karthik Joshi here. There's some Hello. name, there's some guy Karthik. Can I just listen to him कार्तिक please? कार्तिक Yeah, कार्तिक हाँ Karthik, हाँ बोलो Karthik. Yeah. सर अभी आपने ये पॉइंट रेस किया कि मेरा हाथ कट गया फिर भी मैं तो हूं ही. हम्म. तो ये मैं और मेरा हाथ, हम्म. व्हाट इज द डिफरेंस? The difference between मैं और मेरा हाथ, very good. हाँ. So मेरा हाथ मेरे बॉडी का हाथ है. हम्म. मेरा पैर, मेरा हाथ, मेरा सिर, मेरी आंखें, ये सब मेरी बॉडी का हाथ पार्ट है. जो बॉडी मैं नहीं हूं, इज व्हाट भगवत गीता इज सेइंग. मैं कौन हूं? बुद्धि से पहले सेंसेस. आई रिपीट दैट. बुद्धि से पहले सेंसेस, सेंसेस से, सॉरी, बुद्धि से पहले सेंसेस, उसके बाद है मन, मन के बाद है बुद्धि यानी अहंकार यानी मैं, और एक और मैं है जो सीसीटीवी की तरह इन सबको देख रहा है.
what Gita is saying is that boss, तुमको तुम्हारे मन में सब कुछ दिख रहा है, क्या चल रहा है मन में। कभी कभी हम सोचते हैं ऐसा क्यों सोचता हूं मैं यार, मैं अपने मन को पक्का क्यों नहीं कर पाता, ये मैं देख रहा हूँ। राइट, मैं अपने बुद्धि के एक्शंस को देख रहा हूँ। आई एम डूइंग समथिंग, आई एम सीइंग माय बुद्धि एट वर्क, आई एम सीइंग माय सेंसेस ब्रिंगिंग अप स्टोरीज फ्रॉम आउटसाइड वर्ल्ड, एंड आई एम सीइंग माई सेल्फ reacting to those stories. Right, so all of this I am seeing, not I am seeing Anurag Mehta also. So there's something beyond Anurag also. If this was beyond, only then I will be able to see all this, na? So this is not the I Anurag. It is that जिसका नाम देने की जरूरत नहीं है। आनंद संतति शस्त्राणी 2.23 2.24 all this, शस्त्र नहीं काट सकते, अग्नि नहीं जला सकते, एक्सेट्रा। आत्मा, तो आत्मा, अब आत्मा या प्रभु का अंश, I don't use that word या आत्मा। प्रभु का अंश, प्रभु का अंश। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट देते ही ना प्रॉब्लम आ जाती। बात तो सही है, ठीक है, आत्मा को जैसा हम समझते हैं वो सही है, पर आत्मा सोचते ही हम लोग हमको लगता है हमें समझ में आ गया। समझ में आया नहीं है, हमने किसी का वर्ड उठा लिया आत्मा, हमें लगा समझ में आ गया, हमें समझ में आया नहीं है। आत्मा समझ में आने से क्या होता है? इट्स जस्ट अ वर्ड दैट वी थिंक, ओ आत्मा, आई नो आई एम नॉट द शरीर। ये बोल के अच्छा लगता है हमको। भाई डू यू वांट टू गिव अ नेम? वो निराकार है, उसको नाम क्यों देना? नहीं, हाँ बोले तो बोले। जो मैं समंदर है ऐसे ही हूँ, उसका पर आप एक बूंद बोलिए। हूं ना मैं, ऐसा हुआ। आप समंदर हैं। हाँ मतलब मैं जो वो समंदर का बूंद हूं मैं। नहीं, आप समंदर हैं। प्लीज अंडरस्टैंड द डिफरेंस दैट आई एम ट्राइंग टू से। दिस व्हाट गीता इज सेइंग। आप समंदर में बूंद नहीं हैं, आप समंदर हैं। द मोमेंट यू थिंक यू आर अ बूंद, यू विल बी हैविंग अ फियर कि समंदर में मैं डूब ना जाऊं, समंदर में मेरे को compete करना है, मेरे को तैरते रहना है, टॉप पे रहना है। वो प्रॉब्लम ही तब है जब मैं अपने आप को समंदर में बूंद समझ रहा हूँ। जब मैं अपने आप को समंदर समझ रहा हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द पावर, आई रिपीट दैट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द पावर, इट्स जस्ट दैट आई एम देयर द वे आई एम। आई एम जस्ट आई एम। ओके। उसमें मेरे को डिफाइन भी नहीं करना है अपने आप को। द मोमेंट आई ट्राई टू डिफाइन, डिफाइन कौन करेगा? मन डिफाइन करेगा, बुद्धि डिफाइन करेगी। मैं तो उससे परे हूं ना, मुझे कैसे कोई डिफाइन कर सकता है? जिसको पता ही नहीं है मैं कहाँ पे हूँ, वो डिफाइन कैसे करेगा मेरे को? पर जैसे हमें तो पता है ना हम कहाँ हैं, हम आज हाँ बैठे हैं, हम सुन रहे हैं आप। सही है। वो हम में कौन है? वो हम में अर्पित अपना कार्तिक है। वो कार्तिक है हाँ जिसका हाँ, नाम कुछ भी हो सकता था। आज मेरा एक्सीडेंट हो बराबर जाए, है। कहीं पे सिर पे चोट लग जाए, मैं भूल जाऊं सब कुछ, मेरा नाम अनुराग नहीं होगा, वो कहीं गांव वालों ने उठाया, तो मैं गांव वालों में जो नाम रखा वो हो जाएगा। हाँ, और वही मैं मछुआरा बन गया, पता नहीं फार्मर बन गया, सब पीछे पैसा फैमिली सब छूट गई। सो मैं थोड़ी वो हूँ। तो शायद ये जो कर्ता कर्मण मतलब जो 15 चैप्टर है, शायद ये कवर करता है ये टॉपिक। 15 चैप्टर क्या कर रहा है वो मेरे को देखना पड़ेगा एक्चुअली। मैं इसलिए मैं बोल रहा हूँ बहुत शायद मुझे भी याद नहीं, पर मैंने पढ़ लिया और था। मैं ये बोलता हूँ, मैं गीता में पढ़ा हूँ, सब देखा है, करा है, पर मैं आपको एक चीज बोलता हूँ, इन चीजों में मत पढ़ो कौन से चैप्टर क्या कवर करता है। जस्ट बी फ्री फ्रॉम ऑल दिस, दैट इज मोक्ष। जस्ट बी फ्री फ्रॉम ऑल दिस। क्या फर्क पड़ता है किसने क्या ओके। बोला? समझ में आया तो अप्लाई करो, बस इट एंड्स देयर। द मोमेंट यू गेट इनटू दोस रिकॉग्निशंस, मेरे को ये पता है, मेरे को आत्मा पता है, मेरे को चैप्टर पता है, मेरे को श्लोक पता है, संस्कृत आती है, तो यू हैव लॉस्ट द होल थिंग। यू आर देयर एंड यू लॉस्ट इट। अब वहां पहुंच के सब गायब हो गया। यू लीव इट ना, आप काम करो, नहीं, मजे पर करो, मोक्ष जीवन पे में फोकस एंजॉय करते करो। हैं। सॉरी। हाँ, मोक्ष पे फोकस करते हैं तो क्या मोक्ष इज द अटैच मतलब द गोल ऑफ लाइफ? मोक्ष पे फोकस करते हैं, रॉन्ग स्टेटमेंट है। क्योंकि मोक्ष पे हेलो। कौन फोकस करता है? अनुराग मेहता। अनुराग हाँ मेहता तो वही। है ही नहीं। हाँ मोक्ष हाँ, तो है ही, यू आर ऑलरेडी इन मोक्ष राइट नाउ। When you ओके। leave Anurag Mehta aside, as in you leave the attachment from Anurag हम्म Mehta, you are in a मोक्ष। क्योंकि हम्म मोक्ष के साथ तो पैदा हूं, मेरा नेचुरल फैक्ट्री सेटिंग है बॉस। माई कंप्यूटर माई हम्म, डॉक्यूमेंट रिसाइकल बिन को तो मैं मिटा ही नहीं सकता। Similarly, this I cannot बराबर है। metamorphize this. It is just that I'm clouded by the illusion. What Bhagwad Gita is saying, Arjun, you're clouded by the illusion that you are Arjun. You are clouded by this illusion that I'm Anurag Mehta. Now Anurag Mehta wants moksha, something that he already has. So उसको कहीं मिलेगा ही नहीं। जो ऑलरेडी है वो कहाँ ढूंढने जाओगे? इट इज देयर, इट इज माई ओके। नेचुरल एसेंस। सो आई जस्ट हैव टू, वो नेति नेति जो बोलते हैं, या हम वेदों में, या अभी ऋग्वेद में, या हम अभी बात करें, ऑब्जेक्टिव एग्जाम है, 4 ऑप्शन है, आपको क्वेश्चन में डाउट है यार ये 2 में से कोई हो सकता है, ये 2 तो हम क्या करते हैं, जो नहीं आते उनको निकालो। तो ए और डी तो नहीं है, बी और सी में से कोई है ना? तो दैट इज, तो नेति नेति करते करते यू
omit everything that you think you are, because and maybe you'll have to, ये जैसे वेद व्यास ने बहुत क्लियरली बोला, कृष्ण के मुंह से सुनने से अर्जुन को कुछ नहीं हुआ, तो मेरे या किसी भी और के कहने से कुछ नहीं होगा जब तक मैं इसके ऊपर बहुत सारा काम नहीं करूंगा। मोक्ष तो ऑलरेडी है, मेरे को अटैचमेंट छोड़नी है, तो ऑलरेडी आई एम इन स्टेट ऑफ मोक्ष। आई एम फ्री, आई एम फ्री, मुझे फर्क ही नहीं पड़ता क्या चल रहा है। नितिन भाई नोस दिस वेरी वेल। आई एम फ्री, आई एम अटैच्ड टू सर्टेन थिंग्स, बट नितिन भाई नो, so this is what I am. I'm the way I am. I'm free, right? So Arpit, पर before you जिस ask, आत्मा का मोक्ष होता है, कार्तिक कार्तिक sorry, come again. कार्तिक हाँ कार्तिक, क्या बोल रहे हो? नहीं, एक्चुअली मतलब इफ वी से इफ वी आर इन मोक्ष, तो मोक्ष होगा तो वो तो शायद उसका जन्म ही नहीं होगा अगर मोक्ष है तो। नहीं होगा अगर ना, आत्मा भगवान मोक्ष अपनी लेवल गेम पे है। चलाता रहता है, भगवान अपना डायरेक्टर बैठा है, वो अपने हिसाब से कैरेक्टर बना दिया है, मैं हाँ, आप कैरेक्टर बन गया, वो अपने मजे कर रहा है, हम ऐसे लोड ले रहे हैं, अपनी आजकल की भाषा में बात करें तो ओके हम ओके। वो तो अपने मजे कर रहे हैं, डायरेक्टर है, डायरेक्टर अटैच थोड़ी होता है। अमिताभ बच्चन को शत्रुघ्न सिंह ने मुक्का मारा तो क्या अमिताभ बच्चन को रात को नींद नहीं आएगी? इसकी हिम्मत कैसे हुई? अरे कैरेक्टर है यार, बस वही तो बात है। अमिताभ बच्चन when he's playing a character, he is unattached. That's what Gita is saying. You play the role as a character. You don't be attached to the role that you're playing, because अनुराग मेहता ये जन्म में है, अगले जन्म में क्या होगा पता नहीं, इसी जन्म में अनुराग मेहता का एक्सीडेंट हुआ, अनुराग मेहता is nowhere. Why are you getting attached? That is मोक्ष। एक्टिंग के एंगल से देखें तो अमिताभ बच्चन इज इन मोक्ष व्हेन इज नॉट अटैच्ड टू के शत्रुघ्न सिंह ने मुझे मुक्का मारा, he's in मोक्ष, दैट इज मोक्ष। पर बोलना इजी है, मीन्स आई नो दैट, बोलना बहुत इजी है। फ्री ऑफ अटैचमेंट इज अ मोक्ष। हाँ, फ्री ऑफ अटैचमेंट इज मोक्ष, पर आपको उसके ऊपर करना होगा। हाँ, यस सर, यस सर। आ रही है, इधर से आ रही है, इधर से आ रही है, स्पीकर में आ रही है। So Arpit, before you ask the question, give me a second. Somebody sitting next to me also wants to talk, and then ask. ओके ओके है ना, please. Yes sir. ओके ओके, चलो। हाँ जी। Gita is a way of life. Yeah. Secondly, maximum translated book. There are two books in the world. One is Bhagwad Gita. Second is Art of War by Sun Tzu. Sanju. Third is the highest EQ in India is Gujarati. And how? If somebody asks me, I'll give an answer. I carry out a survey in Lucknow 20 years back. It's for UNO, Army, 320 NGOs and all that. So they're working for the NGO, the disability sector or social cause, and they got a high EQ with others. Because they know where the shoe pinches. Correct. They are in the shoes of the disabled people or those in difficulty or poor people. Right. Narendra Modi may become popular just because of that. He thinking of the last man, last village. He will become popular. You mentioned Dhire farmer story. Dhire policy solve that. Right. And is medical, not half an hour interview. ME Gidala is the first day of 150 candidates undergo back on the same night. Correct. ME Gidala is better, right? Then Yeah. old man shutting down. The best book today is written in 19. Rishikesh. There's no question. He's just putting his remarks. None can explain except a Pandit. Pandit means learned man. Concept. Why, from where you go, why you read Gita, and why Anuragi is saying what Anuragi is saying. When you read him, you hear him, he gives you a clue to make you free. But if you want to remain in bondage, create a loop. Yeah. So when you create a loop, you don't want to become free. It cannot be right. Context can be right. Not two lines. Context. Please, finish it up. So when you understand the content with the context, what do you want from that many papers, but they don't want to make them free. Solve है भगवद गीता, कृष्ण भगवान ने किसी को दिखाया, अर्जुन को किसी ने दिखाया, is a concept. Okay. Absolutely. Absolutely. सुनता हूँ, बार सुनता हूँ. He said, agree, disagree. He said, you never need to understand and agree. You need to understand. You need to reason. Correct. So this is the way you can even talk also. जैसे कर्नल साहब है, okay, he has something else to say. So when people start saying something, they don't have a one-liner. One-liner मालूम है?
उनको फुल स्टॉप मालूम ही नहीं है क्या चाहिए. How you can get anything you don't want it? You want to continue. Go, loop, loop, loop. When I listen to Anurag, okay, when he talks at HDFC, when he goes to a big seminar, because he take a lecture to a board of director, he come with a different context. When he go to a class 2 officer, he go with a different context. When he goes to a student, he go with a different context. So his content remains same, but when he gives the talk, his always stories are different. So it is the person who is doing it should understand the concept, not the delivery man. He is the delivery man. I am a delivery man. Correct. Correct. So Anurag, why I appreciate you? Because your contents are so powerful contextually, but some people doesn't want to understand. Right. So Last floor is yours. Last line is, Duryodhana was most powerful than anyone in Mahabharata. But he write 2 lines. I want to do good, but I do not know what happened. I go wrong. That is the crux, because the emotion get hijacked. Over. Correct. Yeah. This Duryodhana himself has written. He himself said. And the last point is, remember that if somebody want to difference between cognitiveness or emotional intelligence and the cognitive intelligence, paper 2002, V.K. Gautam, Journal so and so, 17 variables are there. Yes. The Hindu speaks on management 1998. Yeah, Gautam sir. There's another. They were 5 one liner, huh? Because he's 17 variables are there. Chapter is closed. Gautam sir, आपका lecture फिर से है. I'll certainly be here for that. No. So Arpit, I think Arpit wanted to ask. Thank you so much, sir. Thank you so much. Yeah, Arpit was there. He wanted to ask a question. Am I audible, sir? Yeah, Arpit, you're audible. Hello, how are you, sir? Very good, very good. Arpit Nitin Sir, Bhai is a student and a very, very good friend of mine. Fantastic fellow. Yes, sir. हाँ जी. Actually, मैं physically आना चाहता था, लेकिन but वहाँ online ही join किया. Are we getting the voice? Hello. Yeah, we are getting you. हाँ बोल Arpit. Sir, my question is कि empathy क्या है और empathy को अपन workplace पे कैसे use कर सकते हैं? Okay, empathy. So empathy Yes, is sir. basically, officially speaking, it's putting yourself in other person's shoes. और यहाँ पे गीता जो बोल रही है ना एम्पैथी में, लेट मी जस्ट आई माइट हैव टू सर्च इट, पता नहीं शायद मिलेगा कि नहीं अभी. एम्पैथी एक मिनट सर, मैं गीता में से ढूंढने की कोशिश करता हूं, छोड़ो गीता को छोड़ते हैं अभी. एम्पैथी इज बेसिकली दैट व्हाट भगवान इन विराट रूप इज सेइंग कि अर्जुन, देव भी मैं हूं, दानव भी मैं हूं. So what is the message is, don't hate anyone. So empathy is when you see yourself. I'm forgetting the stroke number. मैंने कि लिखा हुआ है. This is very important actually. Swami Vivekananda's favorite 13.22 or something. What Gita is saying is, when you see yourself in others, meaning yourself कौन सा, सबको समंदर समझ रहे हो, पानी की बूंद नहीं समझ रहे हो. आपको दिख रहा है कि ये भी भगवान ही है. ये अगर कुछ अच्छा नहीं बोला तो, या बुरा बोला तो, और या बुरा अच्छा बोला तो, ये भगवान ही है जो बोल रहा है. क्योंकि देखो, दिस इज फॉर एवरीबॉडी इंक्लूडिंग यू अर्पित. अभी मैं बोल रहा हूँ, सडनली मैं मर गया, मेरी बॉडी यहाँ पड़ी होगी, राइट? यहीं पे राइट नाउ मैं मर गया, मर सकता हूँ ना. आई कैन डाई. आई कैन नॉट से आई कैन नॉट डाई राइट नाउ. आई कैन डाई. सपोज आई डाइड राइट नाउ. मेरी आंखें अभी चल रही हैं, मेरा मुंह, जबान, सब कुछ चल रहा है, मेरा हाथ चल रहे हैं. Suddenly the same thing, everything in the body, dead body, आंखें, कान, नाक, दांत, मुंह, जबान, हाथ, पैर, पेट, सब कुछ है ना उस डेड बॉडी में. क्या नहीं है उसके अंदर? आत्मा नहीं बोलेंगे उसको. There is something called, let's say, जीवन. भगवान भी नहीं बोलेंगे. हाँ, जीवन है ना, लाइफ फोर्स. तो वो है मेरे अंदर, जिसको नाम देने से ही प्रॉब्लम है. जो मैंने अभी भी कार्तिक से बात किया. पॉइंट इज, वही आपको भी तो एक्टिवेट कर रहा है अर्पित. वही नितिन भाई को एक्टिवेट कर रहा है, यही करण से आपको एक्टिवेट कर रहा है. वो आज जितने भी यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ऑल द लाइट्स दैट आर देयर, द एसी इज देयर, चला तो वही इलेक्ट्रिसिटी रही है. इलेक्ट्रिसिटी थोड़ी है जो सभी इंस्ट्रूमेंट्स को चला रही है. वही इलेक्ट्रिसिटी सभी इंस्ट्रूमेंट्स को चला रही है. उसी कॉन्टेक्स्ट में हम समझे,
वही इलेक्ट्रिसिटी मुझे चला रही है, वही वही लाइफ। उसको नाम क्यों देना है, उसको कॉन्सेप्ट क्यों देना है? बस द पॉइंट इज, जो लाइफ फोर्स मेरे को चला रही है वही तुम्हें चला रही है। एम्पैथी इज बॉस, ये अगर इसने मेरे साथ अर्पित पे कुछ बुरा किया है तो कोई बात नहीं, करने वाला तो वो है ना, उसके तो हाथ में कुछ है ही नहीं। अर्पित तो है ही नहीं, अर्पित तो एक इल्यूजन है, अनुराग तो एक इल्यूजन है। तो जो हो रहा है होने दो, जो हो रहा है वो ठीक ही हो रहा है, कुछ तो अच्छे के लिए हो रहा होगा। देव भी मैं हूँ, दानव भी मैं हूँ, पूरा विराट रूप। आजकल बहुत गलत फोटोज आती है विराट विराट रूप की सब जगह, उसमें सभी जगह देव हैं। द रियल मैसेज इज, एक तरफ देव है, एक तरफ दानव है, वो आग निकालते हुए बड़े बड़े दांतों वाले। द रियल विराट रूप पिक्चर इज दैट। मैंने बहुत ढूंढा इंटरनेट पे, मुझे ढंग की फोटो अभी तक नहीं मिली। राइट, इट इज ऑल दोनों तरफ देता, सुंदर सुंदर फोटोज। सुंदर है ही नहीं देव उसमें, कुछ दुनिया में कुछ सुंदर नहीं है। सुंदर बोलने वाला मन है, ईश्वर ने तो जो बनाया है वो उसके हिसाब से अच्छा ही है, उसके पीछे कारण है। राइट, तो एम्पथी ये है अर्पित, जस्ट टू समराइज, एम्पथी ये है दैट आई अंडरस्टैंड you understand me in a way that we are not Anurag and Arpit, that we are just life force and we understand each other. We cannot think negative about anybody, because तू भी तू है, मैं भी मैं हूँ, तेरे को चलाने वाला वो, मेरे को चलाने वाला वो। ना वो सोचने वाला है एक्चुअल जो तेरे बारे में बुरा सोच रहा है, ना तेरे अंदर वो एक्चुअल है जो मेरे बारे में बुरा सोच रहा है। दैट्स हाउ अर्पित, दैट्स हाउ लाइफ इज, दैट इज व्हाट रियल एम्पैथी। साइकोलॉजी वगैरह में, मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ, ये लोग जो भी ज्ञान देते हैं वो ठीक है, पर असली साइकोलॉजी इज वेदांत, असली साइकोलॉजी इज भगवद गीता, इफ यू रीड इट फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू। Okay. राइट, so It's that is like the best a answer I drop can in give. a drop in the ocean is not a drop, but a sea itself. Yeah, it's the ocean। इसके ऊपर भी एक Okay. वीडियो है यूट्यूब चैनल पे, Yes, sir. I watched it. है ना, तो अनुराग मेहता ढूंढेंगे यूट्यूब पे, ड्रॉप इन दी ओशन, ऐसा कोई अहम ब्रह्मास्मि नाम है उसका वीडियो Yes, का, sir. Yes. वो भी आप देखो। और ऑफ कोर्स anuragmehta.com पे तो ब्लॉग है ही। So what it is Yes. saying is this only, that I am not the problem with the whole unhappiness, emotional unintelligence। गीता बोल रही है आ ही इस रही है, इसलिए रही है because you are thinking yourself to be the wrong identity, Anurag। I'm not Anurag, I am life। Similarly, everybody is life. Even this laptop, even in this chair, in this table, that thing is there ना। आज तो एटम्स, क्वांटम फिजिक्स तो कहीं आगे जा चुकी है इससे, और तो बोल ही रही है कि सबके अंदर एटम्स ही एटम्स है जो वाइब्रेट कर रहे हैं। एंड देयर इज 99.9% एम्प्टी स्पेस इन एवरी सिंगल एटम। बिलियंस ऑफ एटम्स, देयर इज सो मच एम्प्टी स्पेस। जो एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स हैं वो तो सब मूव कर रहे हैं, तो वो भी तो लाइफ ही चला रही होगी उनको, अपने आप तो कुछ मूव नहीं करता। और वहीं गीता में लिखा है अगेन, गीता में कहीं पे लिखा है कण कण में भगवान है, कण कण में भगवान है। कौन सा ऐसा कण है जिसमें भगवान नहीं? कौन सा ऐसा कण है जिसमें भगवान नहीं? दैट इज द पॉइंट। Okay, sir. Got your point. Thank you. राइट, Okay, sir. Okay. Anyone have a question? Hello? Anyone have a question? Should I take over? चैट्स या यू कैन। चैट्स में क्वेश्चंस हैं। मैं देखा, मैंने ओपन द चैट्स। चेक में मेरे पास नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं है। लेट मी गो। ब्लू क्वेश्चन का जवाब दे दिया। अनुराग सर, वो विराट स्वरूप की इमेज जो आपको चाहिए थी वो सेट करिए। हाँ ठीक है, हाँ वो आप भेज देना। ठीक है। ठीक है, Anyone have a thank you। question? Tell me. No question. Any questions, anyone? Or should I hand over the mic to Nitin bhai? Siddharth, thank you Siddharth। I saw your comments earlier also, but I couldn't have the time to read। But I think जो मैंने थोड़ा सा पढ़ा, जो आपने काफी लंबा अच्छा मैसेज लिखा है, आई थिंक वो कहीं ना कहीं मेरे को समझ तो आ गया है। तो आई होप आई हैव गिवन द आंसर टू दैट आल्सो सिद्धार्थ। Thank you once ठीक है। again to all listeners. Anyone has a question? Gita, when I was young, I don't need it now because yeah, people are getting it. When I was young, as young as I was in 5th standard, I used to talk on Gita and Ramayana, and it was a eloquency competition in which I appeared for a lot of these things. I know only one thing now,
There are people around the world who deliberate intellectual. People don't care about their intellectual. What is Atma? What is Atman? What is Brahman? When I listen to Anurag, I got a clue what to do in life. At the end of the day, I want result. At the end of the day, what I want, मेरे बॉस से मैं पैसा निकाल सकता हूँ, मेरे बॉस से मेरे को शांति मिले, बॉस अप्रिशिएट करे, मेरा जो सबॉर्डिनेट है, जो पीयर है, I can live with them very easily and effortlessly. When it comes to subordinate, they support me in the function of the company. At the end of the day, when I join a business, I'm a CA, so I'm a businessman. Okay, what I want, client pays me the money, I produce the result, I give my staff the payment, and they deliver the result. So when you read Gita, read from that context. What do you want? अगर आत्मा है, साउल है, गीता में क्या लिखा है, that are very objective, they're very contextual sentences. अगर अर्जुन इतना पढ़ा लिखा है, इतना शार्प है, अर्जुन इज वन ऑफ द बेस्ट, वो जमाने में टॉप 10 रैंकर में आता है. अगर उसको कृष्ण भगवान की बातें समझ में नहीं आई, को कहाँ अनुराग की बात समझ में आने वाली है. हमको तो खाली इतना समझना है कि हमको इसमें से कण लेके ऑफिस में जाके कैसे इस्तेमाल कर सके. दैट इज ऑल. Once I listen, I tell you, I just don't know what to say. I said, उसने जो भी बोला उसमें से 10 चीज है वो मेरे काम की है. Context is subjective. Context is result oriented. Is subjective also. No, I'm not. Subjective is also Person context. specific. Subjective is also discussion oriented. I'm result oriented. अभी ये कर्नल साहब है, ओके, ही इज 100 times पावरफुल. उन्होंने 4 बुक लिखी है. आई एम इंट्रोड्यूसिंग हिम इन द नेक्स्ट सेमिनार विथ a book on him. Okay. And Colonel साहब ने हमारे यहाँ बहुत लेक्चर लिए. He is 77 years old. Colonel साहब is 77 years old. अगर इनका पेंशन मैं इनका रिटर्न भरता हूँ, कर्नल साहब मैं इनका रिटर्न भरता हूँ, तो मुझे पता है उनको पेंशन की इनकम इतनी है. The way he does the business is absolute majestic. मैं कब इसके पीछे उनकी स्टोरी क्या है. मैं जब किसी को मिलता हूँ तो मैं वो बोलते तो पपट की तरह तुम रट्टा पढ़ सको. वो पंडित नहीं होते, रट्टा पढ़ते हैं. पर बिजनेस करो, गूगल की लाइफ में जाओ, पर्सनल लाइफ में जाओ. तुम्हारा काम वाला काम नहीं करता तो गीता थोड़ी पढ़ोगे. काम वाला नहीं है, कचरा पोता करना है, घर में खाना खिलाना है, हस्बैंड को पूरा 100 काम है. गीता का काम आने वाली है, आने वाली है दोस्त. तब रिजल्ट चाहिए. पुलिस वाला खड़ा रखता है, अरे पैसा दो, तुमने लाइसेंस नहीं है. कहाँ गीता पढ़ोगे. एवरीथिंग इज प्रैक्टिकल बॉल्ड अप. सो तब जब आपने अनुराग को सुना, उनकी स्टोरी लिखी. जनरली व्हेन आई लिसन टू अ पर्सन, आई लिसन टू ऑल स्टोरीज एंड देन आई यूज इट हाउ आई कैन यूज इट. इंटेलेक्चुअल डिस्कशन में मैं यकीन नहीं रखता. लास्ट 2 थिंग्स देन वी कंक्लूड. Those who have attended, I thank them. Next Friday, I plan Gautam bhai at same time 6:30. Same this presentation will be available on blog. Last but not least, मेरे गुरुजी हैं, इसने एक किताब लिखी है, Messenger from God. I know him since 1984. This book is costing 100 rupees. 200. 100 rupees. 200. 100. I give you for 100. 100. I give you. I give you 100. You have to pay me 100. With an option. लाइफ में 3 ही प्रॉब्लम है, मैं आपको बताऊं. नो, लाइफ में 3 ही, वो भी कंटेंट है. मैं कॉन्टेक्स्ट बताता हूं. ब्रह्मा, सर्जन, कोई तीनों में एक सर्जन करता है, एक क्या बोलते हैं उसको, उसके नहीं, उसको उसके हैं कि जियो, और तीसरा उसको डिस्ट्रक्ट करता है. बट एज एन इंडिविजुअल वी आर बॉर्न, सो वी डोंट नीड वन. तीसरा जब मर जाए हमको उसकी भी जरूरत नहीं. मरने के बाद हमको क्या, चाहे मोक्ष मिला नहीं मिला क्या पड़ी है, वो तो थियोरिटिकल है, बराबर है. नाउ कम्स लिविंग लाइफ. तो देयर आर ओनली 3 इश्यू.
आपका बॉडी इश्यू होता है। तीसरा लॉजिस्टिक इश्यू होता है। लॉजिस्टिक इश्यू, काम वाला नहीं आया, स्टाफ वाला काम नहीं करता है, एवरीथिंग इन लाइफ। हमको सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है, कोई इग्नोर करता है तो वी बिकम क्या बोलते हैं, बाजू वाला ने पार्टी रखी, मुझे नहीं बुलाया, बाजू वाला नीचे चलती है, मुझे नहीं बुलाया। मेरे ग्रुप में से मेरे यहाँ ब्लॉग है, ग्रुप चलाते, मेरे को निकाल दिया क्योंकि मैंने कुछ पोस्ट किया। यू फील हर्ट। द थर्ड इश्यू, बॉडी इश्यू, माइंड इश्यू, and then money issue. These are three real life issues. Okay? How I can solve these three issues? Money issue मैं कैसे solve करता हूँ? मेरी नीड ही मिनिमम है। मेरे को कुछ चाहिए ही नहीं लाइफ से। 2 वक्त की रोटी चाहिए, मेरे खाने के लिए घर चाहिए। अगर बीमार हो गया, ज्यादा बीमार हो गया, तो उसको बोलो मेरे को कुछ दवाई मत करो, मुझे पेन किलर दे दो, 10 दिन जल्दी मर जाऊंगा। क्लियर? यस नो? कैंसर हो गया, उसको ठोक ठोक के जगाते, जीने मरने नहीं देते बेचारे। अरे मरना है बाबा, उसको कैंसर हुआ, उसको ऑपरेट करते जाते हैं, करते जाते हैं, करते जाते हैं। तो आई एम वेरी क्लियर। तो तुम्हारा मेडिकल एक्सपेंस नहीं रहा, खाने पीने का रहा, रूम में इतनी जगह है, तो मेरी रिक्वायरमेंट कुछ नहीं है। ओके, नंबर 2, देन कम्स इश्यू। क्या इश्यू हो? बॉडी का। लाइक मुझे छोटे छोटे पेन को मैं कैरी नहीं करता, ठीक है, थोड़ा होता रहेगा। आई डोंट, तो आज मुझे हैव अ सीवियर थ्रोट इन्फेक्शन, आई डोंट केयर। क्या करने का? इथ्रो कोई बोले ये ले लो, ये लो, मैं, मेरे को 2-3 दिन में मट खत्म हो जाएगा। मैं गार्गल करता हूँ जिससे मैं सो पाऊँ। इतना इन्फेक्शन है कि मैं सो नहीं पाता हूँ, मैं थ्रोट इन्फेक्शन करके सो जाता हूँ। तीसरा क्या बचा? रिलेशनशिप। आई डोंट केयर। आई आई सी माई मदर इज 93, मेरे को बहुत कुछ बोलती है, मैम हाँ तेरे को लॉजिस्टिक चाहिए वो बता, मैं दे दूंगा। तेरे को खाना चाहिए, पीना चाहिए, खाना पीना तो ऑलमोस्ट बंद हो जाता है। उनको खाली क्या बोलते हैं, उनका जो बैड है वो साफ चाहिए, उससे ज्यादा उनको कुछ चाहिए नहीं, थोड़ा रिस्पेक्ट चाहिए। तो जैसे जैसे आपकी एज ओल्ड हो जाती है, जैसे जैसे आप यंग हो, आपकी रिक्वायरमेंट बहुत कम है, एंड लाइफ बिकम सो फैंटास्टिक व्हेन यू आर फ्री फ्रॉम लाइक क्या उधर उधर का। इधर उधर का मतलब किसी ने मर्सिडीज ली, ठीक है, मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ सबके पास 1 करोड़ की गाड़ी है। मैं जब इनको मिलता हूँ, मैं बहुत सबसे गरीब हूँ, मेरे पास ये गाड़ी है, मैं यही चलाने वाला हूँ। तुम्हारे पास है जैसे मैं रहने वाला हूँ। अगर तुम ये सीख गए, then your life becomes magnificent. ये चालू है, 2 मिनट खत्म कर रहे हैं। ओके, 1 मिनट। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच। मैंने मेरा लेक्चर नहीं दिया, बट हाउ आई लिव लाइफ। अगेन see you next Friday with tons of thanks. आपको प्रेजेंट कर देते हैं। हाँ, नरेंद्र भाई, दामोदर भाई पाठक। मैडम मैं ये